हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके, सो आज हम स्टडी विथ मी ब्लॉग शुरू करेंगे फिर से। ठीक है ना। उसमें आज हम पढ़ेंगे, किस बुक से पढ़ रहा हूँ थोड़ा मतलब बोल देता हूँ। गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, 4th साउथ एशिया एडिशन। ठीक है, एंड हमारा पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और इससे पहले स्टडी विथ मी ब्लॉग्स में भी मैंने मतलब ये चीज़ पढ़ा था। लेकिन मैं किसी भी चैप्टर को ज़्यादा बार पढ़ने पर यकीन करता हूँ। ठीक है, तो आज दोबारा या तीसरी बार शायद होगा हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है ना। एक चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ। मैंने अभी अभी एक यूट्यूब चैनल देखा था, डॉक्टर अनुज पटेल नाम से, आप सभी ने जिनको जाने हैं, सब ने शायद जो मेडिकल फील्ड में है शायद उनको जाना होगा। उन्होंने एक बात, मैं उनका वीडियो देख रहा था, वो बंदा बोल रहा था कि एमबीबीएस करने के बाद जो इंटर्न की फेज में डॉक्टर को दिया जाता है 10 टू लेकर के 30,000, मतलब 10,000 से लेकर के 30,000 दिया जाता है। मैं जब सुना, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ। पहली बार जब मैं उसे सुना, मतलब मैं यकीन नहीं कर पाया कि एक डॉक्टरों को भी इंटर्न स्टेज में इतना कम सैलरी दिया जाता है। हाँ, आई वॉज टोटली शॉक्ड। हमारे देश में आप हरामखोर काम करो, पैसा मिलेगा। आप कोई समाज में कुकृत्य करो, उसके लिए पैसा है। लेकिन जहाँ पर असली पैसा लगाना चाहिए वहाँ मतलब पैसा नहीं मिलेगा। किसी जगह पर अच्छे काम हो रहा है, उसके लिए हमारे सरकार के पास पैसा नहीं है। एक मजदूर आज के डेट में 700 रुपये कमा रहा है, एक मजदूर। ठीक है, 700 से लेकर के 1,000, 500, 350 ऐसे पैसा कमाता है। लेकिन जो हमारे देश के डॉक्टर है, जो हमारे देश के फार्मासिस्ट है, जो हमारे देश के नर्सेस है, मतलब और ख़ास करके इन सभी में अगर सबसे ज़्यादा कोई बड़े पोजीशन पर है वो डॉक्टर है। लेकिन उन्हें 10,000 से लेकर के 30,000 मनी मिल रहा है। तो मैं पूरा मतलब ये विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना कम पैसा कैसे है। पूरे एमबीबीएस में आप 19 सब्जेक्ट पढ़ते हो, एंड एमबीबीएस की जो किताब होती है वो कितना डिफ़िकल्ट है एंड कितनी मोटी मोटी किताब है, ये आप सभी को पता है। उनमें से पता है, मैं ये वीडियो अगर कोई नेता मंत्री देख रहा है ना, मतलब फिल्दी लैंग्वेज यूज करने का इच्छा हो रहा है। एक सामान्य देखो, ये गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, ठीक है? ये देखो, इस किताब का साइज ये है, इसका मोटाई देख रहे हो, ये इसको डॉक्टर पढ़ते हैं, समझ रहे हो? एंड ऐसे एक बही नहीं,
ऐसे अनेक बही पढ़ते हैं। एंड दूसरी बात, हर एक बुक में जो हर एक चैप्टर होता है, मान लीजिए गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, इसमें सब चैप्टर हमें पसंद नहीं आएगा। कुछ चैप्टर हम AK जैन से लेंगे, कुछ चैप्टर हम GK पाल बुक से लेंगे। तो ऐसे करके बहुत मतलब ऑथर को जब आप पढ़ोगे, बहुत बुक को पढ़ोगे, हर एक से कंसेप्ट उठाओगे, तब जा कर के मतलब आप सही से डॉक्टर बनते हो। मैं जब ये सुना, मैं बोल रहा था, मतलब लिटरली शॉक्ड कि हमारे देश में आप अल्लाह अकबर कहो पैसा मिलेगा, आप जय श्री राम कहो पैसा मिलेगा, लेकिन जहाँ पर एक रोगी ठीक होता है वहाँ पर हम पैसा नहीं लगाएंगे। और आपका महत्वाकांक्षा क्या है कि हम विश्वगुरु बनेंगे। मैं आज के डेट में बोल रहा हूँ, भाई विश्वगुरु तो तुम बनोगे नहीं, क्योंकि इस तरीके से पैसा अगर दोगे तो विश्वगुरु बनने का स्वप्न छोड़ दो। भाई एक आर्ट्स टीचर 90,000 पा रहा है, 1.5 लाख पा रहा है, या मोर देन 1 लाख पा रहा है। कम से कम तो 30 हजार से लेकर के 50 हजार से ज़्यादा पा रहा होगा ना। लेकिन एक डॉक्टर जो किसी का जीवन बचाता है, भले ही वो इंटर्नशिप के फेज में है, लेकिन उसे 10 से लेकर के 30,000 दिया जाता है। एक डॉक्टर कितने मोटे मोटे बुक को पढ़ता है आपको पता है? ये देखो मोटाई, इसकी मोटाई देख रहे हो, मतलब इतने चीज को हजम करता है। मतलब भारत ने हमको यार एक चीज सिखा दिया है कि जहाँ उच्च दर्शन आएगा वहाँ हम कम पैसा देंगे, और जहाँ निम्न दर्शन आएगा हम उच्च पैसा देंगे। और भारत में रहते रहते हम ये चीज़ मतलब समझ गए हैं कि ना तो बीजेपी, ना तो कांग्रेस, ना कोई रीजनल पार्टी मतलब नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। बीजेपी आएगा सनातन धर्म की बात करेगा, कांग्रेस आएगा तो वो अल्लाह अकबर की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं करेगा। यहाँ पर एक रिसर्च को बल देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बात नहीं होगी। यहाँ पर कोटा रिजर्वेशन की बात होगी, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात होगी, लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं होगी। हर जगह में आपने भूषण खाना मचा करके रखा है। अगले 50 साल में आप दिखा रहे हो स्वप्न कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे। जब बन जाना तब कहना। 50 साल के आगे के बाद भारत क्या होगा ये जानने के लिए हम यहाँ हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है। आज क्या कर सकते हो वो बताओ, आज क्या कर सकते हो, अभी क्या कर सकते हो, क्योंकि 50 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, पार्टियाँ आएंगी, पार्टियाँ चले जाएंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें यार बंद करो। उच्च दर्शन निम्न पैसा, निम्न दर्शन उच्च पैसा, अब मजाक समझ के रखा है क्या? अब पूरा भारत को मतलब जैसे मतलब कहते हैं ना वेश्यालय जैसा बना दिया है, मतलब उसका सुगंध नहीं। उच्च दर्शन में निम्न पैसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है?
छोड़ो। लेकिन भारत में रहते रहते मतलब जो चीज़ हमको समझना है ना, वो मतलब समझ गए। ठीक है, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं ना, तो ये कहना भी मतलब नहीं पड़ेगा। कुछ अगर कर पाऊंगा तो अभी कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसा आप देश को लेना चाहते हो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे। आशा करूँगा आपको भगवान सद्बुद्धि दे, और ऐसा करके तो भारत कभी विश्वगुरु नहीं बनेगा। क्लियरली बता दे रहा हूँ, ये विश्वगुरु का लक्षण नहीं है। क्लियर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। सो होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ नियर कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मेंटेनेंस ऑफ नियर कांस्टेंट कंडीशन कहाँ पर? इंटरनल एनवायरनमेंट में। आपका इंटरनल एनवायरनमेंट कौन है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेगेटिव फीडबैक, फीडबैक दैट रिड्यूसेस, hence negative, the output of a given system. For example, high circulating level of a hormone reduces the further secretion of that hormone. Negative feedback, so feedback that reduces, जो कि घटाता है, hence negative, the output of a given system. Okay, for example, high circulating level of a hormone reduce the further secretion of that hormone. Positive feedback, feedback that increases, hence positive, the output of a system. For example, injury resulting in bleeding result in release of a clotting factor that themselves increase the clotting process. Physiology is the science that seeks to explain the physical and chemical mechanism. Physiology is the science that seeks to explain the physical and chemical mechanism, the physical and chemical mechanism that are responsible for the origin, development and progression of life. एंड आज के डेट में मैं मतलब माता महाकाली से प्रार्थना करता हूँ कि भारत में ऐसे जितने भी करप्टेड पॉलिटिशियन हैं, साला उसका कुत्ते जैसा मौत हो। यही पॉलिटिशियन होते हैं जो देश को नष्ट भ्रष्ट कर चुके हैं। कुत्ते जैसा इनको दौड़ा दौड़ा करके मतलब मारना चाहिए, तब इस देश में शांति आएगा, खुशहाली आएगा। कुत्ते जैसा मरना चाहिए। Each type of life, from the simplest virus to the largest tree or the complicated human beings, has its own functional characteristics. Therefore, the vast field of physiology can be divided into viral physiology, bacterial physiology, cellular physiology, plant physiology, invertebrate physiology, vertebrate physiology, mammalian physiology, human physiology, and many more subdivision. Human physiology, the science
The science of human physiology attempts to explain specific characteristic and mechanism of the human body that make it a living beings. That make it a living beings. थोड़ा ये ग्लॉसी पेपर है ना, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई करने के लिए, मतलब चीज़ें ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। ग्लॉसी पेपर का कमाल। ह्यूमन फिजियोलॉजी। द साइंस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी attempts to explain the specific characteristic and mechanism of the human body that make it a living beings. The fact that we remain alive is the result of a complex control system. Hunger makes us seek food and fear makes us seek refuge. Sensation of cold makes us look for warmth. Other forces causes us to seek fellowship and to reproduce. The fact that we are sensing, feeling and knowledgeable being is part of this automatic sequence of life. These special attributes allow us to exist under widely varying conditions which otherwise would make life impossible. Cells are the living unit of the body. The basic living unit of the body is the cell. Each organ is an aggregate of many different cells held together by intercellular supporting structure. Each type of a cell is specially adapted to perform one or a few particular function. For instance, the red blood cell, numbering about 25 trillion in each human being, transport oxygen from the lungs to the tissue. Although the red blood cells are most abundant of any single type of cell in the body, about 75 trillion additional cells of other type perform function different from those of the red blood cell. The entire body then contain about 100 trillion cell. मैंने ये डीप सीक को एक बार रिसर्च करके मारा था। डीप सीक ने कहा था हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल नहीं होता है। उसने अप्रोक्सीमेट बताया था 25 या ऐसा कुछ फिगर है। मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं, वरना बता देता। Although the many cells of the body often differ markedly from one another, all of them have certain basic characteristics that are alike. For instance, oxygen reacts with carbohydrate, fat, protein to release energy required for the cell to function. Further, the general chemical mechanism for changing nutrients into energy are basically the same in all cells, and all cells deliver products of their chemical reaction into the surrounding fluid. Almost all cells also have the ability to reproduce
additional cell of their own kind. तो यहाँ पर भी contradiction मुझे देखा गया था. Fortunately, when cells of a particular type are destroyed, the remaining cells of this type usually generate new cell until the supply is replenished. तो यहाँ पर भी मुझे contradiction दिख रहा था. मैं कभी बताऊंगा इसके बारे में. Extra cellular fluid, the internal environment. About 60% of adult human body is fluid, mainly a water solution. Mainly a water solution of iron and other substances. Although most of this fluid is inside the cell and is called intracellular fluid, about 1/3 is in the space outside the cell and is called extracellular fluid. This extracellular fluid is in constant motion throughout the body. It is transported rapidly in the circulating blood and then mixed between the blood and tissue fluid by diffusion through the capillary walls. In the extracellular fluid are the iron or nutrient needed by the cells to maintain life. Thus, all cells live in essentially the same environment, the extracellular fluid. For this reason, the extracellular fluid is also called the internal environment of the body or milieu interior, a term introduced more than 150 years ago by the great 19th century French physiologist Claude Bernard. Cells are capable of living and performing their special function as long as proper concentration of oxygen, glucose, different ions, amino acid, fatty substances and other constituents are available in this internal environment. Now, difference between extracellular and intracellular fluid. The extracellular fluid contains large amount of sodium chloride, bicarbonate ion plus nutrient for the cell such as oxygen, glucose, fatty acid and amino acid. It also contains carbon dioxide that is being transported from the cells to the lungs to be excreted, plus other cellular waste products that are being transported to the kidneys for excretion. The intracellular fluid differs significantly from extracellular fluid. For example, it contains large amount of potassium, magnesium, phosphate ion instead of sodium and chloride ion, जो कि कहाँ पर था, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में था. These difference are highlighted in figure 5.2, जो कि आगे देखेंगे. Special mechanism for transporting ion through the cell membrane maintain the ionic concentration difference between the extracellular
and intracellular fluid. These transport processes are discussed in chapter number 4. Homeostasis, maintenance of a nearly constant internal environment. Homeostasis. Homeostasis. In 1929, the American physiologist Walter Cannon coined the term homeostasis to describe the maintenance of a nearly constant condition in the internal environment, that is, the extracellular fluid. Essentially, all organ and tissue of a body perform function that help maintain these relatively constant condition. For instance, the lungs provide oxygen to the extracellular fluid to replenish the oxygen used by the cell. The kidney maintain constant iron concentration, and the gastrointestinal system provide nutrients. A large segment of this text is concerned with how each organ or tissue contribute to homeostasis. Normal body function require integrated action of a cell, tissue, organ, and multiple nervous, hormonal, and local control system that together contribute to homeostasis and good health. Disease is often considered to be a state of disrupted homeostasis. डिजीज हम किसको कहेंगे? जब हमारा होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म डिसरप्टेड हो जाएगा. However, even in the presence of a disease, homeostasis mechanism continue to operate and maintain vital function through multiple compensation. The discipline of pathophysiology seeks to explain how the various physiological processes are altered in disease or injury. This chapter outlines the different functional systems of the body and their contribution to homeostasis. We then briefly discuss the basic theory of the body's control system that allow the functional system to operate in support of one another. Extracellular fluid transport and mixing system, the blood circulatory system. Extracellular fluid is transported through the body in two stages. The first stage is the movement of a blood through the body in the blood vessel, and the second is movement of a fluid between the blood capillaries and the intercellular spaces between the tissue cell. Figure 1.1 shows the overall circulation of the blood. All the blood in the circulation traverses the entire circulatory circuit an average of once each minute. When the body is at rest,
and as many as 6 times each minute when a person is exactly active. As blood passes through the blood capillaries, continual exchange of extracellular fluid also occur between the plasma portion of the blood and the interstitial fluid that fill the intercellular spaces. This process is shown in figure 1.2. The walls of the capillaries are permeable to most molecules in the plasma of the blood, while exception of a plasma protein, which are too large to readily pass through these capillaries. Therefore, large amount of a fluid and its dissolved constituent diffuse back and forth between the blood Therefore, large amount of a fluid and its dissolved constituent diffuse back and forth between the blood and the tissue space, as shown by the arrows. This process of diffusion is caused by kinetic motion of the molecule in both plasma and interstitial fluid. That is, the fluid in the dissolved molecule are continually moving and bouncing in all directions within the plasma and the fluid in the intercellular space, as well as through the capillary pores. Few cells are located more than 50 micrometer from a capillary, which ensures diffusion of almost any substance from the capillary to the cell within a few seconds. Thus, extracellular fluid everywhere in the body, from that of the plasma and that of the interstitial fluid. Few cells are located more than 50 micrometer from a capillary, which ensure diffusion of almost any substance from the capillary to the cell within a few seconds. Thus, extracellular fluid everywhere in the body, both that of the plasma and that of interstitial fluid is continually being mixed, thereby maintaining homogeneity of the extracellular fluid throughout the body. Now, regulation of a body function. तो आज के स्टडी विथ मी ब्लॉग्स में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी स्टडी विथ मी ब्लॉग्स में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भारत माता की जय।